Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, from today onwards, we are moving with our very new topic, and that is poem, right? Because our next worksheet is about the poem. So first of all, we have to understand the lines and stanzas. Okay, so let's see what is line and what is stanzas. Okay, so while a story has sentences and paragraphs, a poem is made up of lines and stanzas. जैसे हमें पता है कि स्टोरी में पैराग्राफ्स और सेंटेंस आते हैं, तो पोयम किससे बनती है? तो वो लाइंस और स्टांजास से बनते हैं. सो लाइन स्टांजास क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो लेट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई लाइन्स एंड स्टांजास इन अ पोयम. सो लाइन्स एंड स्टांजास, टू नो दिस term, we will first read the poem given below. Two Little Birds, the title. Two little birds sat upon a tree, tweeting to each other, happy and free. One of the birds looked right at me. The other one was startled by a buzzing bee. The wind twittered the leaves on the ground. The two birds flew away, twittering aloud. I listened again, but not a sound came to me from anywhere around. Wow, it's very good poem about two little birds, what they were doing. So here we will not go for the explanation, but what is the line and what is the stanza. So two little birds sat upon a tree. So that is called line, the smallest unit of the poem, and that is line. A line is the smallest unit of a poem. Okay, students? So that you have to write down in your fair book. Lines and stanzas. What is line? So here you can see a line is the smallest unit of a poem that you have to write down. Okay, next, the poem has 8 lines. So first we will give the line 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so how many lines are there? 8 lines are there. So this poem has 8 lines. The wind twittered the leaves on the ground. The two birds flew away, twittering around. I listened again, but not a sound came to me from anywhere around. So that is called stanza, a visual grouping of lines. जो लाइंस का एक ग्रुप बनता है पोयम में, दैट इज कॉल्ड स्टांजा. जैसे पैराग्राफ होता है स्टोरी में, वैसे ही पोयम में वैसे स्टांजा होता है. और स्टांजा कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ लाइन्स. सो दैट यू हैव टू राइट डाउन. क्या लिखना है? ये a stanza consists of a group of lines. So this poem has 8 lines and 2 stanzas. The two little birds, this poem, are often separated by a space between them, means stanza. So they are separated by a space. जैसे पैराग्राफ करते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो स्टांजा में कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो कि एक लाइन है, ब्लैंक है. सो दैट इज कॉल्ड कि ये एक पूरा सेपरेट पार्ट है और ये भी एक पूरा सेपरेट पार्ट है. So between these two we have the space. So that's why we can say here we have the stanzas. 2 stanzas we have, and total 8 lines. 4 lines for each stanza. Okay. This poem has 2 stanzas of 4 lines each. Means ये पोयम में 2 स्टांजा है और एक स्टांजा में 4 लाइन्स है, तो टोटल हुई हमारी 8 लाइन्स. So line, the smallest unit of a poem, and a visualized grouping of lines, that is called stanza. Okay, तो ये पूरा आपको as a
एग्जाम्पल पूरा लिखना है। ओके, तो यहाँ से शुरू करके ये पूरा आपको अपनी बुक में लिखना है। ओके, यहाँ से शुरू करके टू लिटिल बर्ड्स, लाइन किसे बोलते हैं, स्टांजा किसे बोलते हैं। ओके, ये पूरा आपको लिखना है। ओके, सो let's move with next. So here we have practice questions. Identify the number of lines and stanzas in the given poems on the following slides. Okay, तो यहाँ पे जो स्लाइड दी गई है उसमें पोएम दी गई है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है दैट हाउ मैनी नंबर्स ऑफ लाइन्स आर देयर एंड हाउ मैनी स्टांजास आर देयर. So here we have the first poem by unknown poet. So the title, the days of the month. ये जो टाइटल है वो लाइन्स में काउंट नहीं करेगा. ओके, सो लेट्स काउंट द लाइन्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. So we will count it like this. So how many lines are there? 6 lines are there. So is there any stanza? No, there is not any stanza. Okay, so in the first poem we have just 6 lines. Next, Pippa, the name of the poem by Robert Browning, name of the poet. Okay, the years at the spring, the days at the morn, mornings at 7, the hillsides dew peer, the larks on the wing, the snails on the throne, gods in his heaven, all's right with the world. Very good poetry is there. So here we will count the lines. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight. So ये 8 लाइन्स है, उसके बीच में हमें थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही है. So here we have two stanzas and how many lines? 8 lines we have. Okay, so in the second poem we have 8 lines, 2 stanzas. Okay, so this is the way how to find out the stanza even. Okay, then the third, here you have to identify. Now it's your time to identify the lines and stanza. मैंने 2 poem में बोल दिया है. Now it's your turn. Here you have the third, then fourth, then fifth. Okay, बीच बीच में पोज करते जाओ और लिखते जाओ. Then here we have the answers. Very good. First poem में how many lines we have? 6. There is no any stanza. Then second poem में 2 stanza है और 8 lines है. So here lines are indicate and here paragraphs. Then here we have 3 stanza, right? 3 stanzas and 10 lines. Then fourth poem में 2 stanzas and 10 lines. बीच में जो पोर्शन अलग करता है 2 स्टांजा को, that indicates the stanza. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में कितने हैं? 2 स्टांजा है हमारे और कितने लाइन्स हैं? 8 लाइन्स हमारी है. ओके, सो ये हुआ हमारा आंसर्स. तो क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लिख लेना कि कितनी लाइन्स है और कितने स्टांजा है. ओके, सो दिस वाज द वे to identify the lines as well as the stanzas. Okay, so let's move with the next topic. So students, here you can see our worksheet 5. So in this worksheet 5 we have the poem. The title of the poem, The Spider. What is the name of the title? The Spider. So that is the name of the title. Don't count it as a line. Okay, now let's see egg.
Yelp the little boy. Sing a black spider nearby, brushing it away with a scream. Be far from me, prayed he. Be not afraid of her, whispered his loving father. Her little legs may just tickle you, but your big fingers did hurt her. See, the delicate web the spins all day. She spins all day. Those silver threads give a lesson. In this world, patience wins, they say. So learn from the wise spider son. So here we can see Eek, yelped the little boy. When we see a kind of insect, so that kind of feeling will be there, like eek, the spider, right? So here a little boy, he just yelped like eek by seeing a black spider nearby. मतलब नजदीक एक ब्लैक स्पाइडर देख के छोटा सा लड़का था, वो बोला ऐसा, चिल्लाया लाइक यक, ही वॉज जस्ट ब्रशिंग, और डर रहा था वो उसे देखकर. बी फार फ्रॉम मी प्रेड ही, मतलब वो ऐसा प्रे कर रहा था कि मुझसे दूर रहो. बी नॉट अफ्रेड ऑफ हर, विस्पर्ड हिज लविंग फादर. उसके फादर ने उसे अच्छे से, उसे धीरे से बोला कि उसे डरो मत. लिटिल लेग्स में जो टिकल यू, उसके जो छोटे छोटे लेग्स होते हैं स्पाइडर के, it will be tickle you, but you have the big fingers than his her legs, so it will be hurt her. See the delicate web she spins all day. तो जो स्पाइडर का नेट जो होता है, वेब जो वो बनाते हैं, वो बहुत ही ऐसा हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना स्पेशल वो होता है. मतलब कि अच्छी तरह से वो बनाता है, फिर कोई तोड़ देता है, फिर भी बनाता है, तो वो ऐसा हमें इंस्पायर करता है. सी द डेलिकेट वेब शी स्पिन्स ऑल डे, दो सिल्वर थ्रेड्स गिव अ लेसन. थ्रेड्स मतलब वो थ्रेड नहीं है एक्चुअली, बट हियर his father had compared that web with silver threads. So those silver threads give a lesson. क्या lesson देता है कि कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वही वो कहना चाहते हैं. In this world, patience wins, they say. अगर पेशेंस रखते हैं तो हम जीत जाते हैं. ऐसे एंगर से कुछ बताते नहीं हैं, पर अगर धीरज रखते, पेशेंस रखते हैं, जैसे ही यहाँ पे स्पाइडर खुद का वेब बनाने के लिए कैसा पेशेंसली सब करता है, कोई तोड़ देता है तो फिर से बनाता है, पर वो कभी कोशिश हारता नहीं, कोशिश करता ही रहता है. सो उसकी लाइफ में से हमें लेसन मिलता है. इट इंस्पायर्स अस. सो लर्न फ्रॉम द वाइज स्पाइडर्स. तो बहुत ही ऐसी ब्यूटीफुल पोएम विथ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग. कैसे एक फादर अपने बेटे को समझाते हैं, एक स्पाइडर का एग्जाम्पल देते हुए. स्पाइडर को देख के जब वो डरता है तो उसके फादर उसे कैसे समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं. तो ये हुई हमारी स्पाइडर की बात, द स्पाइडर. बट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर एंड हाउ मेनी स्टांजास आर देयर, लेट्स सी. Okay, so count it: first, second, third and fourth. 4 lines. Fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So here we have 12 lines. How many lines are there? 12 lines. And stanzas, so you can see between these two we have the space. So first, सेकेंड एंड अगेन थर्ड, तो ये दोनों के बीच में भी हम स्पेस देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट हियर वी हैव 12 लाइन्स एंड हाउ मैनी स्टांजास आर देयर? 3 स्टांजास वी हैव. ओके, so this poem, The Spider, that contains 12 lines and 3 stanzas. Okay, or in other words we can say this poem has 3 stanzas of 4 lines each. हर एक
स्टांजा में 4 लाइन्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 लाइन्स के 3 स्टांजा है. ओके, सो 4 into 3, 12. So total 12 lines. Okay, so it's all about this poem, The Spider. Okay, students, if possible, I will send this some of the answers of these questions. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही. Whatever the question answers, whatever the homework is provided it to you, just do it on time and send it to me. Okay, students, so here we are going to end up our today's lecture. If you find any difficulties regarding this, you are free to ask me. Thank you. Thank you, my dear all students, and have a nice day. Bye, everyone.